So agricultural startups are being promoted to promote entrepreneurship in the farming sector. Besides that, once again, agricultural credit has been expanded. Well, what does the budget have to say on artificial intelligence? Let's take a look at that now in greater detail. This year's budget carries significant announcements to promote digital innovations in India during the Amrit Kaal leading to 2047. Take a look. While presenting the Union Budget, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that for realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutes. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of excellence for artificial intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health and sustainable cities. To unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy will be brought out soon, which will enable access to anonymized data. National Data Governance Policy to unleash innovation and research by startups and academia. A national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. A national digital library for children and adolescents will also be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres and levels and device agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at the panchayat and ward levels. National Digital Library for Children and Adolescents. A national digital library for children and adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres and levels and device agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. On 5G services, Finance Minister announced that 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions to realize a new range of opportunities, business models and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems and healthcare applications. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions to realize a new range of opportunities, business models and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems and healthcare applications. For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business and it will be facilitated through a legal mandate. With Parliament Team, Bureau Report, DD India. इस बजट की एक खास बात और है कि इसमें बहुत बड़े बड़े ऐलान नहीं किए गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं की गई हैं, नई स्कीम्स का ऐलान नहीं किया गया है। जो पुरानी योजनाएं हैं या जो पुराना फोकस है ईज ऑफ लिविंग को लेकर के, उस पर फोकस और ज़्यादा बढ़ाया गया है
और अगर आप देखें तो स्किल डेवलपमेंट मिशन 4.0, जिसमें कि न्यू इकोनॉमी के लिए लोगों को ट्रेन करना है, कुछ ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, उसके लिए PMPVGT स्कीम जिसको मिशन मोड में लागू किया जाएगा, PM प्रणाम, ये कुछ 2-3 स्कीम्स हैं जिनको स्पेशली आगे चल करके लॉन्च किए जाने की बात है। लेकिन सबसे बड़ा जो फोकस है वो ईज ऑफ लिविंग पर है। और जैसा कि आपने देखा कि जल जीवन मिशन पे 70,000 करोड़ रुपए, करीब 80,000 करोड़ रुपए PM आवास योजना, तो जो योजनाएं सैचुरेशन की तरफ जा रही हैं उनको ज्यादा पैसे देने का जो स्ट्रेटजी है उस बजट में साफ तौर पर नजर आती है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा न्यूज नाइट स्पेशल बजट 2023-24। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। तो दिखता ही है भाई, पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेक माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा। अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। Welcome back. You're watching the special edition of Newsnight Budget 2023 that you can see, and soon makers of the Union Budget are expected to join us. Those are the real brains behind the budget. We'll understand in detail, particularly the direct tax provisions or the personal income tax provisions that affect you and me most, and indirect taxes, as well as a host of other issues relating to the budget. लेकिन देश के सभी लोगों को के समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने बजट में कई घोषणाएं की है। अंत्योदय योजना के तहत जो गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है, जहां सरकार 2 लाख करोड़ रुपए वहन करेगी, और दूसरी ओर देखें तो जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए PMPBGT विकास मिशन शुरू किया जाएगा। आइए देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट में क्या कुछ है खास, इस खास रिपोर्ट में। बजट में सबका साथ सबका विकास के सरकार के सिद्धांत पर विशेष जोर रहा। खासकर किसानों, महिलाओं, युवा लोगों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों यानी कि सभी वंचितों को वरीयता देते हुए समावेशी विकास को संभव बनाने पर सरकार का जोर रहा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. वित्त मंत्री ने बताया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूह में लाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। Economic empowerment of women. Deendayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding and marketing of their products. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विशेष रूप से जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री PBTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PBTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PBTG Development Mission will be launched. This will saturate PBTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में वित्त मंत्री ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि अब ये सुनिश्चित करेंगे कि उन विशाल उत्पादक उद्यमों या सामूहिक संस्थाओं के गठन के जरिए ये समस्त समूह आर्थिक विकास के अगले चरण में पहुंचे। वित्त मंत्री ने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres and levels, and device agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. वित्त मंत्री ने कहा कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती, महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज और वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। ब्यूरो इनपुट के साथ पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज। तो चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ खास पैनल होगा जिसके साथ हम चर्चा करेंगे टैक्सेशन को लेकर के। कई मजा आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2023 न्यूज नाइट स्पेशल। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान।
लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें। अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। जब AIC का है साथ तो डर ना फिकर की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में SIP तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चले चलिए। समझ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी वहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Welcome back. You're watching the special broadcast of News Night. Budget 2023 is what we are calling it, and we are now focusing on the direct tax changes that have been made in the Union Budget presented today by Finance Minister Nirmala Sitharaman. Joining us now is the head of the statutory body, CBDT. He heads the direct tax regime in the country. A pleasure, Mr. Gupta, for joining us. CBDT Chairman Nitin Gupta is with us. Mr. Gupta, the biggest news that came out of the budget is the new tax regime changes, as well as it being made the default tax regime. What was the intent behind this? The government intent in the past few years has been to reduce exemptions and deductions and provide a simplistic regime, and that has been provided 2 years ago. Looking to its takeoff, we are providing it a better scheme, a sweetened scheme, so that taxpayers can utilize this scheme in a big way, and for that purpose a lot of tax benefits would be available to the taxpayer in terms of the amount of tax which they pay at their respective income disclosed by them. लेकिन नितिन सर, ये समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारे लोगों को कि नए स्कीम में जाएं या पुरानी स्कीम में जाएं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। उन्होंने सवाल की शुरुआत यहीं से की, जब 2 साल पहले आपने लॉन्च किया उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑप्ट नहीं किया इस हिसाब से। फिर इसको मैंडेटरी बनाने का या फिर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बनाने का क्या पर्पज़ नज़र आता है इस बजट में? मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो भी स्कीम है इसको डिफ़ॉल्ट ज़रूर बनाया गया है, वो कंप्यूटर की सुविधा के लिए बनाया गया है, परंतु ऑप्शन टैक्सपेयर के पास है कि वो पुरानी रिजीम में रहना चाहता है या नई रिजीम में रहना चाहता है। जैसे भी उसको कर में राहत उसको फील होती है, आती है, जी जी, वो उसको ऑप्ट कर सकता है। और व्यापार के लिए जो व्यापारी है उसके पास पहले भी एक ही बार रिजीम में जाने का या निकलने का मौका था, अभी भी वही मौका रहेगा। तो टैक्सपेयर के लिए पूरी सहूलियत दी गई है
और हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार का रेट स्ट्रक्चर रहा है, स्लैब्स हैं, उसमें हर टैक्स पेयर को टैक्स पे करने में राहत मिलेगी और वो इस रिजीम को ऑप्ट करने पे उसको फायदा होगा। आप कह रहे हैं कि नए रिजीम में फायदा होगा लोगों को, लेकिन फिर भी विकल्प आपने दिया है। लेकिन सर हम क्या ये माने कि ये जो नया टैक्स रिजीम या डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जिसको आपने लॉन्च किया है, क्या ये कंटिन्यूटी इसमें अब दिखाई देगी या फिर हर साल इसमें फिर से बदलाव, जैसे पुरानी रिजीम में हमने देखा एग्जेम्पशंस को लेकर के बदलाव, या फिर आपने ट्रांसपेरेंसी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए इस नए कल्चर को अडॉप्ट करने का फैसला लिया है? देखिए, जैसे भी जो टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन है और जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबिलिटी पे बिलीव करता है और हम ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे कंपनीज हों, जो आपने देखा होगा पीछे 22% की रेट पे लाया गया, उनको 15% की रेट पे लाया गया। उसी में आपने देखा होगा कोऑपरेटिव सेक्टर को भी वो इस बार हमने बेनिफिट दिया है, 15% के लिए टैक्स रेट लाया गया है। तो सरकार का प्रयास यही है कि नो डिडक्शन नो एग्जम्पशन पे रहा जाए, जिससे कि कर प्रणाली सिंपल हो सके, लिटिगेशन ना हो, और उसी कड़ी में ये एक अलग कदम है और हम ये मानते हैं कि हम इसको आगे सरकार इसको जारी रखेगी। Right, Mr. Gupta, I'll go back to the initial point that you had made. Is there any reason to speculate or think about phasing out of the old tax regime over the next few years? Is this the beginning of that? You've told us that this is for the facilitation purpose, for the tax administration purpose. As of now, no decision has been taken, and as you have seen in the corporate sector as well, both the regimes, all the three regimes are working. 30%, 22% and 15%, and therefore the endeavor has been to simplify the processes and procedures for the benefit of the taxpayer, and for this purpose the tax administration is working relentlessly for the like there is a proposal for a unified ITR. So similarly this is one of the measures taken in that direction. और इस चर्चा में हमारे साथ विवेक जौहरी साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि CBIC के चेयरमैन हैं। तो इस वक्त हमारा पैनल टैक्स के मोर्चे पर पूरा हो चुका है। इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे नए गेस्ट हैं। विवेक जौहरी जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। इनडायरेक्ट टैक्सेशन को लेकर के जो सोच इस बजट में दिखाई देती है वो स्पष्ट तौर पर ये दिखाई देती है, आप एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है उसको बचाना चाहते हैं, उसको भी प्रमोट करना चाहते हैं। तो ओवरऑल जो फिलॉसफी है इनडायरेक्ट टैक्सेशन की वो क्या रही, वो आपसे समझना चाहेंगे। जो आपने दो बिंदु जिनका आपने अभी उल्लेख किया, उसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी थीम जो हमने इस बजट में और पिछले 2-3 बजट्स में देखी कस्टम्स ड्यूटीज़ को लेकर या इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर, वो सरलीकरण के ऊपर भी है। और इस बजट में एक बड़ा प्रयास जो इस दिशा में हुआ वो प्रस्तावित जो रेट्स, जो नंबर ऑफ रेट्स है उनमें जो कमी लाई गई है, 21 से घटकर वो रेट्स अब 13 रह गए हैं। उसका मेन कारण ये है कि जितने कम रेट्स होंगे उतना आपका टैक्स स्ट्रक्चर सरल होगा, उसका अनुपालन करने में करदाताओं को भी आसानी होगी और जो डिस्प्यूट्स हैं, टैक्स डिस्प्यूट्स हैं, वो भी कम होंगे। तो इस आशय से एक तो ये कदम लिया गया बहुत बड़ा इस बजट में, और इसके अतिरिक्त जो एग्जेम्पशंस हैं, कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशंस हैं, उनका बड़ा डीप रिव्यू किया गया है, और जिसका आपने पहला चरण पिछले बजट में देखा होगा, और उसी प्रक्रिया को आगे ले जाते हुए इस बार भी हमने काफ़ी कस्टम एग्जेम्पशंस को रिव्यू करके कुछ को टर्मिनेट किया है और कुछ को जारी रखा है। Right. Mr. Johri, again in the spirit of what we've seen in the previous budgets, I understand that luxury goods and sin goods have been made more expensive. Is that the idea? Because certain cigarettes will become more expensive, and imports of some silverware like silver bars etc. are set to become more expensive with customs duty being hiked? So these are two different things, and I think I should clarify. I'm glad you asked me this question. So if you're talking about sin goods and the enhancement in excise duty rates on cigarettes, the national calamity contingent duty, that in my view is more of a catch-up, because if you recall there was no hike in excise duty on cigarettes for the last 3 years, and this year, even if you were to account for inflation, there was a slippage in the incidence of tax on cigarettes. So we've tried to catch up on that and enhance the rates of tax by about 16%.
With silver, the justification and the rationale is slightly different. We noticed that there's a very huge spurt in the import of silver, Right. particularly over last year. And moreover, there was a differential in the duty rates that were applicable to gold and platinum vis-a-vis silver. So, and what happens is that when gold dore bars, for example, are purified, and you recover, precious metal from it, you recover all three metals, gold, silver and platinum. So it made good economic sense to equalize the rates of duty on all three. So that has been the larger justification for enhancement in duty on silver. As far as articles made out of gold and other precious metals is concerned, the idea is to provide a differential between the duty on the raw material and the finished product, so that once again value addition can happen in the country, and it gives a boost to domestic manufacturing of these items. Mr. Gupta, is it fair to make that assessment that for those in the low income threshold, middle income threshold as well as high income threshold, there is something for all three of people falling in these subsets insofar as personal tax changes are concerned and direct tax as a whole? Yes, you have rightly narrated the question. In all the three thresholds, whatever band you are talking about, there will be the benefit. Up to 7 lakh tax will be nil, and from 7 to 15 lakh there will be benefit at each level, ranging between depending upon the income, as the Honorable Finance Minister had said that for income of a particular amount the tax incidence will be 5%, on 15 lakh it will be only 10% effectively. So every level there is a benefit provided to the taxpayer. नितिन सर, अगर एमएसएमई और प्रोफेशनल्स की बात की जाए तो आपने एक प्रोविजंस क्या कि उनको थोड़ा सा सरल करने की ज़रूरत है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि नई टैक्स रिजिम में जो सैलरी नहीं है प्रोफेशनल्स हैं उनका क्या होगा, उनको उनके टैक्सेशन को लेकर के क्या प्रोविजंस हैं? जो आयकर कानून में प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम का प्रावधान है, और उसमें अभी तक व्यापार के लिए 2 करोड़ की थ्रेशोल्ड थी टर्नओवर की, और प्रोफेशनल के लिए 50 लाख की थ्रेशोल्ड थी। उस थ्रेशोल्ड को बढ़ा के 2 करोड़ को 3 करोड़ किया गया है और 50 लाख को 75 लाख किया गया है। लेकिन एक शर्त रखी गई है कि जो रिसीट है उसकी वो 5% से अधिक उसकी नॉन बैंकिंग चैनल के अलावा ना हो। तो एक डिजिटाइजेशन को थ्रस्ट दिया गया है, और उन लोगों को बेनिफिट होगा इसका जो कि मुख्य अपना कार्य नॉन कैश रिसीट के माध्यम से करते हैं। दूसरा, इसमें एक एमएसएमई को ये पाया गया था कि जो बहुत से व्यापारी हैं उनको समय पे भुगतान नहीं करते हैं, और एमएसएमई के पास चूँकि वर्किंग कैपिटल की कमी होती है उसको बड़ी कंस्ट्रेंट होती है। तो इस बार ये प्रावधान भी किया गया है कि जो भी भुगतान करना है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हो या एमएसएमई एक्ट के मुताबिक हो, जो भी कम है पीरियड उसके भीतर ही अगर भुगतान किया जाएगा तो ही वो एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर करा जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये एक एमएसएमई के लिए समय पे भुगतान अगर होगा तो उसकी जो वर्किंग कैपिटल है उसकी कॉस्ट कम आएगी और वो मोर कॉम्पिटिटिव बन पाएगा। Mr. Gupta, many people are watching today and they are confused about whether to go in for the old tax regime or the default new tax regime. Can you break down for the viewers the benefits of being in both and the lack of benefits of being in both? जैसे मैंने पहले कहा, as I have already told you that the new regime will be beneficial at all levels. There could be few cases which will be very minuscule in terms of are filed, where the taxpayer is utilizing all sorts of deductions and exemptions which were available to him in the old regime, say house property loss of 2 lakhs, and then deduction under 80C or any other chapter 6A which allows 1.5 lakh, and then national pension scheme for 50,000, and then 80D for medical insurance and all that. So if every deduction has been utilized, in only in those very few cases there could be a benefit in the old scheme, else it will be beneficial to opt for the new scheme. आप हिंदी के दर्शकों को भी बता दें।
नई स्कीम सभी वर्ग के जो टैक्स पेयर हैं उन पे बेनिफिशियल होगी, चाहे वो 7 लाख तक उनका निल होगा, 7 लाख से अधिक होने पर उनको हर स्लैब में बेनिफिट है, और अगर बहुत ही हाई उच्च इनकम है तो उसको सरचार्ज का बेनिफिट दिया गया है नई स्कीम में। जो डिडक्शन एग्जम्पशंस की बात है, चूंकि तनख्वाह से जो तनख्वाह लेने वाले जो वेतनभोगी जो हमारे टैक्स पेयर हैं उनको नई रिजीम में 50,000 रुपये और 1/3 ऑफ सैलरी का भी डिडक्शन मिला है, जो कि ओल्ड रिजीम में था। तो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए वो एट पार हो गया नई रिजीम और ओल्ड रिजीम। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि पूरा डिडक्शन एग्जम्पशन को ले लेते हैं, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी का हो जहां 2 लाख रुपए तक ब्याज की छूट मिलती है, 80C में 1.5 लाख रुपए की, नेशनल पेंशन स्कीम में 50,000 की, या 80D वगैरह में जो मेडिकल इंश्योरेंस में 25,000 की। इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे वो बहुत ही मिनिस्क्यूल हैं, हमने डेटा का अध्ययन किया है, और इस प्रकार के लोगों को हो सकता है कि पुरानी स्कीम बेनिफिशियल हो, लेकिन इतना अधिक डिडक्शन एग्जम्पशन लेने वाला व्यक्ति कम से कम 15 लाख या उसके अधिक का आमदनी होती होगी, तभी होता होगा। उस पर भी हमारा ऐसा अनुमान है कि नई रिजीम उसको बेनिफिट देगी, तो उसके हाथ में कुछ पैसा बचेगा और उसको फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी टैक्स पेयर को कि वो किस जगह अपना पैसे को इन्वेस्ट करे, ना कि फोर्सेबली जैसे आज हो रहा है पुरानी स्कीम में उसको डालना पड़ता है। जी, और सर कोऑपरेटिव्स को टैक्स के दायरे में लाने के पीछे की क्या सोच है, और क्या आपको लगता है कि एक नया क्लास कम से कम एंटरप्रेन्योर्स का गाँव में उभरेगा, और इसको लेकर के कुछ क्लैरिटी इस बजट में दी गई है? कोऑपरेटिव सेक्टर की डिमांड ये थी कि उनको भी जैसे कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिनमें 15% कर लगता है, उसी प्रकार से उनको भी बेनिफिट दिया जाए, और वो सरकार ने नई कोऑपरेटिव जो बने और जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी उनको वही बेनिफिट दिया है जो कि जिस प्रकार से कंपनियों को दिया है। हालांकि उनको भी उनको डिडक्शन एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं लेंगे, तभी वो उसमें जा पाएंगे। कुछ और भी कर की रियायतें दी गई हैं, छूट दी गई हैं कोऑपरेटिव सेक्टर को, जिससे कि उनकी कार्यप्रणाली सुलभ हो सके। जैसे कि जो कोऑपरेटिव बैंकिंग का काम भी करती हैं उनको 3 करोड़ रुपए तक का, 1 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ रुपए तक का अगर वो पैसा निकालेंगे तो उस पर TCS नहीं होगा। इसी प्रकार से जो कोऑपरेटिव जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो अपने मेंबर का जो ट्रांजैक्शन है उसमें कैश का ट्रांजैक्शन की लिमिट 20,000 रुपये है, तो वो लिमिट अब बढ़ा करके हमने 2 लाख रुपए तक कर दी है, जिससे कि उनके जो मेंबर्स हैं इंटर से ट्रांजैक्शन लोन लेना और चुकाना उसको 2 लाख रुपए की लिमिट कर दी गई है। और एक अन्य जो कोऑपरेटिव सेक्टर को फायदा दिया गया है वो पुराने कर के कुछ जो शुगर केन फैक्ट्रीज थी उनका कुछ लिटिगेशन था, और वो लिटिगेशन काफी लंबे समय तक चला, और उससे रिलेटेड जो मैटर है उसको रिजॉल्व करने का भी प्रावधान दे दिया गया है। और जो शुगर केन का प्राइस है जो गवर्नमेंट निर्धारित प्राइस तक जो उनने डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने मेंबर्स को, उसको मान लिया जाएगा, और उनको एक सहूलियत दे दी जाएगी कि वो अपने अर्जी लगाएं, और उसको असेसिंग ऑफिसर रिलीफ उस कर के ऊपर दे देगा। और ये 10,000 करोड़ रुपए कैसे खर्च होंगे सर शुगर कोऑपरेटिव्स के लिए? नहीं, ये चूंकि ये खर्च नहीं होंगे, ये ऐसा एस्टिमेट है कि उनके ऊपर लगभग 10,000 करोड़ रुपए की ऑलरेडी डिमांड है, परंतु चूंकि ये एक लिटिगेटेड इशू रहा है इसलिए इसको रिजॉल्व किया गया है। इसका तात्पर्य ये होगा कि ये जो भी लिटिगेशन, इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि कई बार लॉसेज होते हैं जो सेटअप होते हैं या डिप्रिसिएशन का कैरी फॉरवर्ड लॉसेज रहते हैं, तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए रियलिस्टिक अमाउंट आ जाएगा, और उसकी छूट उन कोऑपरेटिव को असेसमेंट ईयर 16-17 से पहले की मिल जाएगी। Mr. Johri, through the changes in the indirect tax regime, how is green mobility being promoted? So, green mobility we have been focusing on, there are 2 specific proposals in this year's budget which I would like to talk about. One of course is the use of CNG. And there was a concern that there is double taxation of compressed biogas when it is blended with CNG and then used for transportation or for any other purpose as a fuel.
So because compressed biogas attracts a GST of 5%, and when it is blended with CNG, then again it is chargeable to an excise duty inclusive of that GST. So we've granted an exemption to make sure that the double taxation is dispensed with. So that is one benefit which is very specific to green mobility in this budget. The other one is about the electric vehicles. Yes, so for electric vehicles, we have done, we've given an exemption to capital goods and machinery, which is required for manufacture of lithium-ion cells and lithium-ion batteries in the country. Currently, that exemption is available to manufacturers of lithium-ion batteries and cells for mobile phones, but the same exemption has now been extended to lithium-ion batteries and cells of electric vehicles. The third thing which has happened is that because of the rate rationalization and reduction in the number of rates in the budget for basic customs duty, there's been an increase on completely built units. The basic customs duty that is chargeable on completely built units of electric vehicles, or those that are brought in SKD condition. So that will provide slightly higher support to domestic manufacturers of these kind of vehicles. So I think that's the third specific thing about green mobility. जैसे साहब इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को लेकर के आप लोगों का क्या एजम्पशंस हैं, और आगे जाते हुए अगर स्पेसिफिकली आप बता पाएँ कि जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को लेकर के जो आप लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो कब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी, और इसके आगे की दिशा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन को लेकर जो बेसिक एजम्पशन है वो इस बजट में जो जीडीपी का रेट ऑफ ग्रोथ अज्यूम किया गया है अगले साल के लिए, वो जैसा आपको मालूम होगा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10.5% अज्यूम करी गई है, और इसी को हमने ध्यान में रखकर जीएसटी रेवेन्यू के भी प्रोजेक्शंस किए हैं अगले साल के लिए। हमारा ये अनुमान है कि जो करंट बॉयंसी है जीएसटी रेवेन्यूज़ में और जो ग्रोथ हम देख रहे हैं कई कारणों की वजह से, वो अगले साल भी जारी रहेगी और हमें ये लक्ष्य पूर्ति करने में कोई खास मुश्किल नहीं आएगी। कॉम्पनसेशन सेस की मियाद जैसा आपको मालूम है पिछले साल जून में कॉम्पनसेशन सेस क्योंकि वो 5 साल के लिए ही निर्धारित किया गया था परिषद द्वारा, तो इसलिए उसकी समाप्ति हो गई। लेकिन क्योंकि कोविड के वक्त स्टेट गवर्नमेंट्स और एसजीएसटी के रेवेन्यू में कुछ कमी आई थी, कॉम्पनसेशन सेस के रेवेन्यू में भी कमी आई थी, जिससे कि हम स्टेट्स को पूरा कॉम्पनसेशन नहीं दे पा रहे थे, तो हमने मार्केट बोरोइंग करी थी और मार्केट बोरोइंग करके स्टेट गवर्नमेंट्स को वो पैसा प्रोवाइड किया गया था। इसके साथ साथ परिषद ने यह निर्णय भी लिया था कि कॉम्पनसेशन सेस की अवधि 2 साल बढ़ाई जाए, ताकि जो भी रेवेन्यू कॉम्पनसेशन सेस से इकट्ठा हो उससे जो लोन लिया गया था उसका रीपेमेंट हो पाए। तो कॉम्पनसेशन सेस की अवधि 2025 तक ही है, और जो भी रेवेन्यू से आएगा उससे रीपेमेंट ऑफ लोन किया जाएगा। Mr. Johri, another provision has been made with regard to reducing the customs duty on seeds that are used in manufacturing of lab-made diamonds. So tell us about the thought behind the decision to reduce the customs duty on that. So as you're aware, India is a very competitive sort of production base for cut and polished diamonds. So in Surat particularly, you have a very large industry, and it's also one of our major exporters. You know, if you look at the export basket, cut and polished diamonds have a very large share in that. Now over a period of time, what we found is that we've been dependent on imports of rough natural diamonds because we don't have adequate reserves of natural diamonds in the country, and we've been importing these so that they can be cut and polished in the country. Over a period of time, because of the depletion of these reserves all over the world, there has been a movement and shift in consumer preference towards lab grown diamonds, which are cheaper
and which serve the same, value statement. So, they're as good in terms of their looks and feel. And that's the reason the world is moving towards lab-grown diamonds. Now, what we have done in this budget is that we have, in order to give a fillip to the cutting and polishing industry on the one hand, and secondly, in order to encourage the production of lab-grown diamonds. Currently, lab-grown diamonds are all imported in a big way, and we do the cutting and polishing here, although there is some manufacture which has begun of lab-grown diamonds as well. For making lab-grown diamonds, you need seeds. And these are natural diamonds which are cut in a certain way, they're sliced, and they're very thin slices which are then used for seeding of lab-grown diamonds. So a full exemption from basic customs duty has been provided to seeds for manufacture of lab-grown diamonds in this budget, and the purpose obviously is to encourage domestic production of lab-grown diamonds and growth in that sector. Right. चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो इन दोनों ही मेहमानों के साथ हमारी ये खास चर्चा जारी है, और ख़ास तौर पर जो प्रोविजंस किए गए हैं टैक्सेशन को लेकर के, जो कन्फ्यूजन अभी तक था आप लोगों के मन में, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सवालों को आपके बिहाफ पे दोनों ही चेयरमैन CBDT CBIC चेयरमैन के सामने रख पाएँ। तो ये खास चर्चा में आप बने रहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक इस खास प्रोग्राम में। Stay tuned. काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सर उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो चलिए चलते चलते नितिन सर, ये जो TCS और TDS के प्रोविजंस हैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो जो ट्रेसिंग आप लोग करना चाह रहे हैं उसकी कितनी मदद मिलेगी। मिसाल के तौर पर आपने फॉरेन रेमिटेंस के लिए कुछ TCS का ऐलान किया है, ऐसे ही TDS के लिए फॉरेन रेमिटेंस जो LRS होता है उसमें शिक्षा और मेडिकल के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है, परंतु अदर देन दैट शिक्षा और इसके अलावा जो घूमने फिरने के लिए या गिफ्ट देते हैं या फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें बदलाव करके उसकी जो कर की रेट है वो 5% से 20% की गई है। और इससे ये है कि अगर जो खर्चा बाहर किया जा रहा है वो विनिवेश जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है विदेश में हो रहा है उसको भारत में हो। और चूँकि किसी भी टैक्स पेयर की जो इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो 30% के दायरे में आता होगा या कम से कम 20% के दायरे में आता होगा, तो उसी पे ही टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। बाकी जो TDS के कुछ प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है वो रेशनलाइजेशन का ही प्रस्ताव है। इसमें मुख्यतः जो है ऑनलाइन गेमिंग है जो कि एक बड़ा सेक्टर उभर के आ रहा है और स्टार्टअप्स भी उसमें शामिलात हैं। तो उसमें कर का जो कुछ विसंगति थी या जो कुछ
कंफ्यूजन था उसको दूर करने के लिए टीडीएस में बदलाव किया गया है और अब विनिंग और लॉसेस को नेटिंग करके ही टीडीएस करने का प्रावधान रखा गया है। परंतु जो 10,000 रुपये का थ्रेशोल्ड था उसको हमने हटा दिया है, यानी कि अगर 5,000 रुपये भी आपने कमाए हैं तो उस पर 30% का कर डिडक्ट हो जाएगा, जो कि रेगुलर रेट है इस प्रकार के आय की। Very quickly, can those with business income opt for the new tax regime at any time, just like salaried income people can? Very quickly. Yes, they can. The existing provision says that only once they can come to the new regime, the Right. provision will remain the same as of now. नितिन गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और विवेक जौहरी जी आपका भी शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। So now the question that arises is that what does budget for FY 2024 have to say for the Indian industry, and how has the Indian industry responded to the provisions of the budget? So the Indian industry has responded positively to this year's Amritkal budget. FICCI President Subrakant Panda called it a balanced, progressive budget that gives primacy to inclusive growth. Industry reactions have coming in, and right, for now we'll take a breather, we'll take a break, but soon after, the makers of the budget, the brains behind the budget, will now be joining us very shortly. We'll be back very soon. Stay tuned to DD News and DD India. भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। जब AIC का है साथ तो डर ना फिकर की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। आरबीआई कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। The brains behind the budget are joining us very shortly, but before that, let's listen into some reactions from the Indian industry. The Indian industry has responded positively to this year's Amritkal budget. FICCI President Subrakant Panda called it a balanced, progressive budget that gives primacy to inclusive growth. Listen in. The budget comes across as extremely balanced and progressive, and what strikes out most is that there is primacy accorded to growth, which is as an industry chamber, as representatives of industry, that is exactly what we wanted to see. And clearly a
focus on the agricultural sector with significant outlays, focus on urbanization, and on digitalization is a continuation of what this government has done over the last 7 or 8 years. Comforting about this budget is that it is continuing in a predictable manner towards the goal that the government has articulated. If you look at the priorities, they are clear, and the thrust on infrastructure building continues. Those were industry reactions. Also, Union INB Minister Anurag Singh Thakur lauded the Union Budget 2023-24 and said that the first budget of Amrit Kal has created a strong base for India's bright future. He added that this budget is for the poor, farmers, women, youth and middle class. Listen. मैं तो देखता हूँ मोदी जी का सपना भारत को विकसित भारत बनाने का, और अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के इस विराट संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूत नींव रख रहा है। ये बजट गांव, गरीब, महिला, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौजवान, किसान सबके लिए है। सही मायने में ये नए भारत का, विकसित भारत बनाने का बजट है। तो चलिए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ बहुत ही खास पैनल जुड़ गया है। मैं उन सभी से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे राइट यानी दाहिनी तरफ है संजय मल्होत्रा जी, जो कि राजस्व सचिव हैं। बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। मुझे के लेफ्ट में अजय सेठ जी, जो कि आर्थिक मामलों के सचिव हैं। G20 की कमान भी सर के पास में ही, और बजट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका सर की रहती है। CA साहब को कल हम लोग मिल चुके हैं इस प्रोग्राम में। ख़ासतौर पर आर्थिक सर्वेक्षण इन्हीं की अगुवाई में लिखा जाता है, इन्हीं की टीम जो है वो पूरा आर्थिक सर्वेक्षण लिखती है, और बजट पर भी इनकी टीम का काफ़ी असर देखा जाता है। और परमेश्वर अय्यर साहब, जो कि CEO हैं नीति आयोग के, और ख़ासतौर पर जो बड़े रिफॉर्म्स हैं जो सैनिटेशन और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के, वो एक पर्याय है देश में और कौन उन्हें नहीं जाता। बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। अजय सेठ साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। इस बजट का अंडरलाइंग जो प्रिंसिपल है वो एक तरह से अमृत काल का पहला बजट स्पष्ट तौर पर वित्तीय अनुशासन हमें दिखाई देता है, पारदर्शिता दिखाई देती है, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को फोकस दिखाई देता है। आप लोग कैसे, एक बजट टीम कैसे इस बजट को डिफाइन कर रही थी जब आप लोग बनाने की प्रक्रिया में थे? शुरुआत अगर वहीं से करें सर। इसका हमारा उद्देश्य ये था कि जो आर्थिक प्रगति की दर है उसे किस तरह से बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ जो वैश्विक क्षेत्र पे जो अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, अनसर्टेनिटी का एक माहौल है, उससे अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह से बचाएं, और इसके साथ ही साथ जॉब क्रिएशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। इस सब को करते हुए जो एक वित्तीय अनुशासन है, जो फिस्कल प्रूडेंस है, उसे कमज़ोर नहीं करना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और एक साथ एक महत्वपूर्ण अंग था कि जिन्हें अभी भी ज़रूरत है सरकार से मदद की, उनके लिए मदद होनी चाहिए। Mr. Malhotra, what was the overarching vision for revenue generation in this budget? Yeah, so it's basically a continuation of our policies. How do you raise revenues? There are three factors. One is, the income. The second thing is the rate, and the third is efficiency. So we have not increased rates. We don't have direct control, over how the economy does. But yes, through the budget, by giving, more in the hands of the public, like we have done, through the new income tax, changes in the new income tax regime. And the third thing is collection efficiency. So the focus really is on simplification, rationalization, increasing the tax base, and wherever there are loopholes to be plug them so that tax avoidance can be minimized, if not totally eliminated. Mr. Nageshwaran, we've heard you talk on the economic survey. It's had a very medium-term outlook, and we got a sense of that in the finance minister's budget. She said that this is the first budget of Amrit Kal. So we are looking at a roadmap for the next 24 years now, this being the first Amrit Kal budget. Do you see it as a visionary budget? Yes, I would say so. I mean, because this budget lays the platform very well for the kind of goals that we are pursuing in the Amrit Kal.
because it pursues what I call responsible growth through public investment, at the same time without sacrificing macroeconomic and fiscal stability. So in that sense, if we have to reach the goals we set for ourselves, we need to have not only steady growth but sustained growth, and this budget is a very important first step in that process. Right. And Mr. Iyer, what are your thoughts on the budget? Because there are several provisions there about the center-state coordination, about pushing reforms at the state level and connecting a lot of financial allocation to it. And this is something that the Niti Aayog also deals closely with. So what is your view, if I may ask, your overall perspective on the budget? Sure. I think it's definitely an inclusive growth budget, which colleagues have just spoken about. But if you look at the social sector, I think that has really been now taken down to the grassroots level. So Niti Aayog works very closely with states. The finance minister mentioned the state support mission. So going beyond the success of the aspirational district program, which is really looking about taking them up to the national level, some of the more lagging districts, now that has been taken further down to the block level. And this program was launched by the Prime Minister a few weeks ago. So it's really about taking development down to the people all the way. So I think that's one aspect where Niti Aayog has been working with the states. But apart from that, if you look at some of the other significant features of this budget, particularly the focus on the poor, the vulnerable, the tribals. So this was, I think, a huge sort of much needed impetus to tribal development. For the PM PVTG, the particularly vulnerable tribal groups, a huge amount of 15,000 crores for this mission, which will really deal with this particularly lagging segment among the tribals and to give them basic services in 3 years. So that's just one example. Another very striking feature of the budget, and it's something which I've been following for the last few years, is the announcement by the FM to move from manhole to machine hole. And I think if we follow that agenda, and in cities we can go in for mechanical evacuation, that again is particularly dealing with human dignity as well. So very significant. अजय सेठ साहब, बजट में ग्रोथ पर फोकस ज़रूर दिखता है, लेकिन उसका वो ग्रोथ तभी आएगी जब हमें इन्वेस्टमेंट मिले। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है कि बजट कहाँ पर वो कौन से प्रोविजंस हैं जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का काम करेंगे, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को? इससे मुख्य तौर पर अगर हम देखें पिछले 7-8 महीनों में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी हुई है। अब वो उस रफ्तार से नहीं आए जिस रफ्तार से पूरी तरह से वो लोड ले सकते हैं, तो उसके मद्देनज़र ये डिसाइड किया गया कि अभी एक और वर्ष पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना है। उसको ध्यान में रखते हुए जो इस वर्ष का एक रिकॉर्ड 7.5 लाख करोड़ का बजट था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उसे फिर से 33% बढ़ा के 10 लाख करोड़ ले जाया गया। तो इससे कोशिश करी गई है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों ही साथ में, जिसे कहते हैं बोथ द इंजन्स फायरिंग वाली की बात करी गई। और इसी के साथ एक ये भी प्रयास किया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लाना है तो उसके लिए क्या सहूलत दी जा सकती है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। जी, और इस वक्त टीवी सोमनाथन जी जो कि वित्त सचिव हैं हमारे साथ इस वक्त इस खास पैनल के साथ जुड़ चुके हैं, और तुहिन कांदा पांडे जी आपको भी बहुत धन्यवाद, आप दीपम के सेक्रेटरी हैं। एक तरह से पूरा पैनल, एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू सर। थोड़ी देर बाद मैं आपके पास आऊँगा। संजय सर, अगर हम सभी लोग ये सबसे बड़ा सवाल यही उठा रहे हैं क्योंकि बजट को पहली नज़र में सब लोग देख रहे हैं तो न्यू टैक्स रिजीम उन्हीं को दिखाई दे रहा है, और कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल या डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स बहुत सालों से जो हम लोग सोच रहे थे उसका फाइनली आपने ऐलान कर दिया है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये हम लोग किस नए कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं अगर हम टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें? नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट टैक्सेशन में ये स्कीम हालांकि पहले भी थी, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उतनी अट्रैक्टिव लोगों को नहीं लग रही थी। लेकिन सरकार की ये हर समय से मंशा रही है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रयास न केवल पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम में किया गया है, बल्कि कॉरपोरेट टैक्सेस रिजीम में भी हमारे पास में इसी प्रकार से एक एग्जेम्पशन के साथ में और एक बिना एग्जेम्पशन के 2 रिजीम्स हैं। और उसमें जो बिना एग्जेम्पशन के जो रिजीम है, जिसमें केवल 22% सरचार्ज इत्यादि मिलाकर के लगभग 25% होता है,
और जो एग्जेम्पशन वाली जिसमें ले सकते हैं लेकिन टैक्स रेट हायर है उसमें 30% है, उसमें हमने देखा कि बिना एग्जेम्पशन वाली स्कीम में बहुत ज़्यादा रुझान रहा और लगभग 61% कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू आज के दिन में एग्जेम्पशन रहित के बिना जो है वो स्कीम से आ रहा है। तो सरकार की हर समय ये मंशा रही है कि एग्जेम्पशन से हम दूर हटें ताकि लोग जो है अपने स्वयं के विवेक से ये डिसाइड कर सकें कि उनको यदि निवेश करना है या कोई बचत करनी है या कुछ और व्यय करना है, इंश्योरेंस में व्यय करना है, तो वो अपने हिसाब से व्यय करें और टैक्स के ज़रिए से न करके और एक सिंप्लीफाइड रिजीम जो है वो हमको उनको दें। वो पहले प्रयास किया गया और इस बार जो है और अधिक जो है उसको अट्रैक्टिव बनाया गया है। कई सारे बदलाव जो हैं जो मैं समझता हूँ कि आपके व्यूअर्स को आज दिन तक अब तक जो है उन्होंने देख लिए होंगे, तो ये काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव रिजीम है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी की इनकम 15 लाख से ऊपर है, 15.5 लाख रुपए तक, और वो सैलरीड है, तो उसको 52,500 रुपये का नेट बेनिफिट जो अभी वर्तमान में जो हमारी न्यू टैक्स रिजीम है उससे आता है। तो ये 52,000 रुपये का एक तरह से एक अच्छा उनको जो है बेनिफिट इसमें मिलेगा। उसी प्रकार से ये सभी आय वर्ग के लोगों को कुछ जो है इसके अंदर में उनको टैक्स में सहूलियत होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले नहीं था इस रिजीम में, न्यू रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, वो भी इसके अंदर में हम लाए हैं। तो इस प्रकार से ये सभी माध्यम से न्यू टैक्स रिजीम बिना किसी एग्जेम्पशन के वो अधिक अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ये सबके लिए एक सिंपल रहेगा और सबके लिए लाभदायक रहेगा। Mr. Malhotra, so there are two tax regimes, an old one and a new one, and they are coexisting. Over time, do you expect the structure to be like that, or could one replace the other? I mean, obviously, the move is, towards moving towards Unified regime, in which there are no exemptions. That is the whole thrust. But one doesn't want to do it abruptly, and one wants to give choice and give choice and option to the public, to themselves, choose for themselves and decide from themselves as to which one they find more attractive. Hopefully they'll find this more attractive, so that this becomes kind of we have made it the default option for them, but it becomes the default choice also for them. नागेश्वर सर, अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी कितनी छाया बजट में दिखाई देती है, या फिर आपकी टीम ने जो कुछ भी रिकमेंड किया है, एज एन इकोनॉमिस्ट टीम अगर हम कहें नॉर्थ ब्लॉक में बैठ के, तो बजट के डिसीजंस में, बजट के प्रोविजंस में वो कितने रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आते हैं? I think we did mention in our economic survey the continued importance of infrastructure, enhancing the productive potential of the economy, and then we talked about trust-based governance, agricultural productivity, MSME sector. Actually, the budget actually ticks all these boxes. The emphasis on 10 lakh crores of public investment, boost to MSME sector through additional allocation for the ECLGS scheme, and also boosting their receivables through a very clear provision, nudging the buyers to pay them on time. And then you look at the ease of living and ease of doing business for ordinary households, etc. So I think all of those 5 pillars that we feel that contribute to the productive potential of the economy, all those 5 pillars have been further strengthened in this budget. Right, Mr. Iyer, there was a lot of speculation ahead of the budget also that there could be urban reforms, and there is a mention of municipal bonds, etc. also. Now, we know that for viability of various municipal bodies, they require money, and then there is an incentivization of user charges as well. So, do you think that this will boost the process of urban reforms, because we are looking at smart cities, etc. going forward? I think absolutely. I think this budget is actually focused quite significantly on urban governance, particularly in tier 2 and 3 cities. And so the setting up of the urban infrastructure fund to incentivize some of those governance reforms. There's a big agenda. Urbanization is a growing trend, and it's important that it spreads across all cities. There are about 5,000 urban local bodies, and I think the thrust and setting up of this fund will incentivize better infrastructure, better governance, and better quality of life in these tier 2 and 3 cities, which is very important.
Ajay ji, the basic question that comes to mind is how confident are we on the fiscal consolidation roadmap? The finance minister did say that the targets will be achieved till 2025-26. But this is the world of uncertainties. So what is the sense that you have, and what would you like to tell the viewers who would be wondering whether about our debt to GDP ratio, whether that is sustainable, about our fiscal health overall? See, Finance Minister announced 2 years back that by 25-26 will reach less than 4.5%, and last year she committed herself once again and for 6.4, and the present numbers are showing that we are well on track. She has reiterated that commitment once again, and moving forward, going from, and for the next year the target set is 5.9, going from 5.9 to 4.5 over a period of 2 years is eminently doable. And there's something, the way economy has been growing, even with the nominal growth rate coming 10% plus, and we expect that in the future the growth rate should pick up further. These are very doable numbers. Okay, and on inflation management, how confident are we? Because the CA also referred to it that India has done much well, much better rather, compared to advanced economies. Your thoughts on inflation management going forward? So there are a few inherent advantages which we have. While there are few items where we import inflation, for example petroleum products, etc., but there are a number of items where we produce for ourselves, that Atmanirbhar Bharat, wherein that is much more doable, manage the inflation scenario. And if you look at it for the past 1 quarter, the inflation has now come down to below the 6% of the upper band, and we do expect that over the next 12 months or so it should be closer to about 4%. CSR, अगर हम इसमें देखें तो R&D पे हमें फोकस स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, और ये भी कहता है बजट कि हम कौशल विकास के चौथे चरण की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर जो न्यू इकोनॉमी है उससे रिलेटेड जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर हम लोग फोकस करने जाएंगे। तो जो अगला हमारा जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, जिसमें आपने अगले डेकेड में कहा कि हम 6.5 to 7% ग्रोथ करेंगे, कितना इम्पॉर्टेंट है ये R&D पे फोकस करना अलग अलग क्षेत्रों में फार्मा और कुछ सेक्टर्स के लिए स्पष्ट प्रावधान देखें इस बजट में? No, I mean undoubtedly the research and development as an area of importance is true not only for the government but also for the private sector. The government is of course setting up in the Center for Make Artificial Intelligence in India and Make Artificial Intelligence for India. Both are important indicators of government's willingness to expand the frontiers of science and technology, apart from several other initiatives in the budget related to agricultural sector, or for that matter with respect to the green transition as well. But ultimately the initiative for moving the Indian R&D agenda lies very much with academic institutions and industry, and the kind of partnership that both of them can strike with each other in order to make sure that India doesn't lag behind in terms of technology, especially in a world which is going to be politically quite divided, and therefore we need to have our own technological capabilities, and the onus lies as much with the private sector as with academic institutions. Right. CSR, I'd gone through the economic survey, and in the context of G20 you mentioned two things. One is crypto regulation and the other is the tourism sector, and you say that this is an opportunity to make India the tourism destination of the world. The budget speaks about how tourism will be taken up in mission mode, and that there will be a sort of a very comprehensive approach towards tourism. So how is this expected to give a boost to employment generation, to economy as a whole? How do you look at the perspective that has been put forth by the FM on tourism? No, I mean when it comes to employment, obviously the public investment proposal as well as tourism are two key aspects of the budget in terms of job creation. Because tourism is particularly attractive because of its skill and labor intensity, and it is in fact a kind of sector which can provide employment opportunities for semi and low skilled workers as well. And that is why, and not only it is a matter of boosting the country's image, but it is also a matter of earning precious foreign exchange as well as creating employment opportunities. So I think the priority and the importance given to the tourism sector will serve us quite well
in many aspects, both strategic and economic. Okay. And the two guests who are joining us are Mr. Somanathan, he is the Finance Secretary and the Expenditure Secretary, and also Mr. Pandey, the DPM Secretary. So welcome again to this special broadcast. You know, first of all, your overall thoughts on the budget. What is the overarching vision that you see? Because you are one of the makers of the budget. I think I see three major items of focus, right, which are complementary. The first is a stress on keeping India's macroeconomic growth rate high, because growth is the fastest route to development but also to reducing poverty. So there's a strong stress on growth. You see it in the capital expenditure provision, you see it in a number of the other provisions in the financial sector, on infrastructure funding, urban infrastructure development fund, and so on. So those are to push growth. But this is balanced with a strong emphasis on not doing something which is macroeconomically unwise, not doing the kind of things that some of our neighbors have done, and basically letting the economy continue on a prudent macroeconomic path. So we have pushed growth, but pushed it within a framework of prudence. So there is a distinct attempt to consolidate the fiscal deficit while increasing public spending. It's a difficult thing to do, but that's what the budget has attempted to do. The third important part of this framework is that while promoting growth, while preserving macroeconomic stability, the budget has tried to take care that no one is left behind. People whom the market economy may not support on its own, the government has taken special measures to take care of each and every one of these groups, ranging from particularly vulnerable tribal groups to women to the unskilled and to every class of the underprivileged. So I think these are the three main points of stress in the budget, and it is the balance between these three that we have attempted to achieve. इस बजट में सर एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट जो लोगों को ये दिख रहा है कि जो जेल में ऐसे कैदी जिनके पास बॉन्ड्स भरने के लिए पैसे नहीं है उनको भी गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो लोगों ने शायद सोचा भी नहीं था, ऐसे लोगों के लिए भी इस बजट में प्रावधान है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को मेन फोकस में रखा गया है। लेकिन एक्सपेंडिचर का रैशनल थोड़ा सा सर हमें थोड़ा सा डिटेलिंग में आप बताएं कि जो एक्सपेंडिचर आपने प्रायोरिटीज़ की हैं इस बजट में, उसके पीछे का रैशनल क्या है, सब्सिडीज़ को लेकर के आपकी आप क्या सोचते हैं, और जो ओवरऑल ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए एक्सपेंडिचर किए गए हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? इस बजट में जो एक्सपेंडिचर प्रायोरिटाइजेशन किया गया है, ऐसा है कि एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर को जितना हो सके हमने बढ़ाया है, दूसरी तरफ इसके लिए क्योंकि मैंने कहा कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी कायम रखना है, तो इसलिए हमने ये अप्रोच लिया है कि जहाँ संभव है वहाँ हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को टाइट कंट्रोल में रखा। ऐसा नहीं कि कम किया है, लेकिन टाइट रैशनलाइजेशन और कंट्रोल पे रखा है, ताकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रोथ बजट ग्रोथ से कम है। मतलब जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर ग्रोथ है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ग्रोथ के रफ्तार ओवरऑल एक्सपेंडिचर ग्रोथ से कम है और कैपिटल एक्सपेंडिचर एवरेज से ज़्यादा है। सो ये फोकस रहा है। इसमें रिडक्शन इन सम ऑफ द की सब्सिडीज, फर्टिलाइजर, food has helped. It's a very important part of this strategy. There I think the basically global factors have an important role to play, but there are also a number of measures that the government has been taking to reduce leakages. All the efforts on DBT taken all these years, they are beginning to give us results. So this expenditure rationalization is not an accident, it is also a conscious policy. जी कुछ नई स्कीम्स का भी जिक्र किया गया है और इट्स एन ओपन फोरम, जो भी इस सवाल को लेना चाहते हैं। जो पीएम प्रणाम योजना है उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स नहीं आई, तो अगर आप थोड़ा सा इस कार्यक्रम के जरिए बता पाएँ कि उस स्कीम में हम क्या कर पाएंगे। इट्स ओपन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सवाल किसके पास है। ये इस स्कीम का उद्देश्य ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग एक्सेसिव है हमारे एग्रीकल्चर में,
ऐसा नहीं कि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना है, लेकिन जिस मात्रा में अभी यूज हो रहा है वो सॉइल के लिए भी अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है और एग्रीकल्चरल आउटपुट के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर लगाओ लेकिन आउटपुट वैसे ही है। तो इसलिए इसको चेंज करने के लिए this will be a scheme which will incentivize state governments to promote alternative natural fertilizers and provide them with fiscal incentives whereby they will get money to help them promote it, and this will also be a win-win for the states and for us. Mr. Somanathan, there is a lot being done to promote private investment, and a particular signature initiative could well be the Infrastructure Finance Secretariat. I'll just add one thing to what I said. Please. The reason state governments are important, why PM Pranam? Though agriculture is primarily in the domain of the states, fertilizer subsidy is not a centrally sponsored scheme. It's 100% borne by the center. Every paisa of fertilizer subsidy is borne by the center, even though agriculture is with the states. So the states have currently no fiscal incentive to do anything about the fertilizer. So this is an attempt to work together in a spirit of cooperative federalism, where the states and the center work together to shift from excessive use of chemical fertilizers to an appropriate use of chemical fertilizers with the right dose of non-chemical fertilizers. But sir, यूरिया सब्सिडी यूरिया सब्सिडी में थोड़ा सा हमें रिलीफ देखने को मिला सर। नंबर्स में हम देखें तो शायद उसमें सब्सिडी थोड़ी सी कम हुई है। इंटरनेशनली जो प्राइसेस हैं उनके बिहेवियर किस तरह से आपको आगे मतलब ये सब्सिडी के आगे आने वाले सालों में और कम होने की उम्मीद है? जिस तरह से हम शायद नैनो यूरिया पे फोकस कर रहे हैं, वो एक हमारा अच्छा इन्वेंशन है जो शायद थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कर सकता है और सब्सिडी के बर्डन को कम कर सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज है फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी का पूरी इकोनॉमी में देखें तो। ये फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में जो रिडक्शन दिखाया गया है बजट में, इसका मूल कारण ये है कि ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस एंड गैस प्राइसेस, ये दोनों डिटरमिन करते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी को। गैस प्राइसेस फॉर यूरिया एंड इंपोर्ट पैरिटी प्राइसेस फॉर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स बोथ हैव डिक्लाइंड फ्रॉम द पीक। सो वी हैव टेकन एन अप्रॉक्सीमेट 20% रिडक्शन फ्रॉम दिस ईयर्स फिगर, which we think is reasonable. तुनकादर पांडे सर, स्वागत है आपका। और आपसे तो बस सीधे एक ही सवाल चलिए कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि ये इट्स सॉर्टेड। तो अगर सीधा सवाल आपसे डिसमिसमेंट को लेकर के, तो बजट में क्या कुछ दिखाई देता है? हमें स्पष्ट तौर पर कुछ ज़्यादा समझने को नहीं मिला। आप ही अगर समझा पाएँ तो विनिवेश को लेकर के हमारी सोच क्या है इस आने वाले साल के लिए? देखिए, जो दीपम है वो 3 कैटेगरी में इसमें इन्वॉल्व है। एक तो पहले ये कि जो CPSEs हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक रहे, उनमें प्रॉफिटेबिलिटी रहे और उससे काफ़ी मात्रा में जो डिविडेंड आता है वो डिविडेंड हमें मिलता है। तो एक डिविडेंड का है जिसका कि 43,000 करोड़ का प्रोविजन रखा गया। दूसरा है कि कुछ जो एक्टिविटी हम विनिवेश करते हैं, तो एक विनिवेश का वो है उसका 51,000 करोड़, तो दोनों को मिला के लगभग 94,000 करोड़ की व्यवस्था इसमें की गई है। Is that for the next fiscal? नेक्स्ट फिस्कल। Okay. तो तीसरा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो CPSE का कैपेक्स। आप देखेंगे कि 10 लाख करोड़ की कैपेक्स की बात हो रही है, उसमें से उसमें ये जुड़ा हुआ नहीं है। जो CPSE का लगभग 4 लाख करोड़ का जो इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से जो कैपेक्स है वो भी इकोनॉमी में उस कैपेक्स को वही करता है जो कि इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ जिसके बाद हम करते हैं। Right. Please continue. तो इन तीनों को दृष्टि से देखा जाए तो उसमें तीनों की व्यवस्था बजट में। Right. Mr. Somanathan, you missed the question on the Finance Infrastructure Secretariat. How is that going to change how private investment? Yes, Mr. Seth. So, Infrastructure Finance Secretariat has two purposes. One is to help or work with the stakeholders in each infrastructure subsector to shift away or shift from taxpayers financing to user financing or ratepayer financing, meaning they get more and more bankable projects, and that's going to be long haul. It has to be a glide path to come in. To give an example, today telecom, ports, airports, these are largely private sector funded, but when it comes to railways, roads, urban infrastructure, these are mostly public resources, taxpayers are financing it. So one part is move
on that path. Second one is the capacity building, and that's a journey which is started last year and it continues even in this year to take those sectors towards the user pay. And there the two major announcements which are coming in is on urban planning reforms, which can be the source for financing urban infrastructure, and as well as making cities credit worthy for municipal bonds, and there a part of the 50-year interest-free loans to the states will be used in incentives to prepare the cities to move in those two directions. परमेश्वर सर, अगर आपसे समझना चाहें ये जो फोकस है SHGs पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए हम कैसे ग्रोथ को प्रोपेल कर पाएँ, साथ ही साथ विश्वकर्मा अभी PM विकास योजना जो लॉन्च की गई है उसमें जो आर्टिसंस हैं उसकी उनकी स्किलिंग करके कैसे उनको मार्केट कर पाएँ, आपको लगता है कि वाकई ये ग्रोथ के एक बड़े इंजन साबित हो सकते हैं आगे जाते हुए और इंक्लूसिव ग्रोथ को एक साथ ही प्रमोट करेंगे ग्रोथ के साथ साथ? I totally agree with that. Self-help groups, there are about 80 lakh self-help groups in India, and they're already doing very well. They are providing self-employment, they're generating income, and with a little more push from the budget in terms of marketing and branding, they can actually create more employment and generate more income and revenue. In addition to that, the talk of the unity malls in states, once they are set up there, you can also bring in the ODOP, one district, one product. So that can also be marketed there. So that can be connected with the self-help group movement as well. Artisans के बारे में आपने कहा, again, these are people who are skilled. Now, how do you take that skilling to another level so that they can generate more income? And I think again, this is a big push through this budget. The pushing through of the artisans, carpenters, plumbers, etc., who are functioning currently at a low wage level, but I think with a little more encouragement, little more support, they can move up the value chain. जी, सोमनाथन सर, थोड़ा सा जो हमारा कौशल विकास का 4.0 या चौथा चरण है उसके ऊपर हम थोड़ा सा आपका फोकस रखना चाहेंगे। और एक पैरा में हमने कहीं पढ़ा कि अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करने के लिए शायद आप DBT के जरिए उनको कुछ पैसे, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि क्या ये कैसे आप लॉन्च करेंगे इस मिशन? जहाँ तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का सवाल है, ये एक नया कंटिन्यूएशन स्कीम है, लेकिन इसका एक नया रूपरेखा है। जो अभी तक हुआ है उसमें ट्रेडिशनल स्किल्स, ज़्यादातर ट्रेडिशनल स्किल्स का एम्फोसिस रहा है, लेकिन अब इसमें ये 4.0 में न्यू एज स्किल्स ऑफ टुमारो, उस पर हम ज़्यादा बल देंगे। Several of them have been mentioned in the speech, mechatronics, all these emerging technologies where the youth of tomorrow need to acquire skills rather than the traditional technologies alone. Not that all those will not be relevant, but many of them may be, but there are these new age skills, and the emphasis in this will be to train the youth in the skills that will make them employable in tomorrow's economy and prepare them today. So वो उसमें main focus area है। और जो नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के बारे में आपने कहा, इसमें यह है कि आज के सिस्टम ये है कि उनका जो फिस्कल सपोर्ट भारत सरकार देता है वो थ्रू द एम्प्लॉयर जाता है। उसमें देर आर मेनी वेरी ethical and good employers, but there are also cases where the full support doesn't reach the employee or the apprentice, not an employee, an apprentice. So to make sure that the apprentice gets the full amount that the government is giving towards the apprentice as a stipend, this is will be done now through a direct benefit. Okay. Mr. Pandey, I've noticed a very interesting feature of the Government of India and social media. They started a campaign, promises made and promises delivered. So in the context of disinvestment, how would you put it for the viewer to understand? Because there's a PSC policy, there was a decision earlier taken that all the central public enterprises except in post-strategic areas will be privatized. So can you give us a status of implementation? देखिए, जो PSC पॉलिसी है वो एक मार्गदर्शक के रूप में पॉलिसी है और उसको कार्यवाही करने के लिए समय लगेगा, क्योंकि ये तो आप देखिए जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, इसमें बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अभी जारी हैं और उनको हम कंप्लीट कर पाएँ। इसमें हमको 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए समय के हिसाब से। एक तो बैंडविड्थ कितनी है,
क्योंकि जो हमारी बैंडविड्थ है, जैसे जैसे हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं बैंडविड्थ भी कम होती है। जैसे लगभग 4 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट ओवर लास्ट 8 ईयर्स हुआ है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो मार्केट कंडीशंस हैं, जो मार्केट कंडीशंस की क्या स्थिति है। तीसरा जो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं बहुत से लिस्टेड कंपनीज़ में, उनका जो उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ता है। और चौथा जो इसमें विषय है प्रोसेस है, किसी भी उसमें जो प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस है, खास करके जब भी हम मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें समय लगता है। इन सभी को देखते हुए ये एक प्रक्रिया है जो कि समय सापेक्ष है और धीरे धीरे चलती है। अजय सर, अगर आप एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड को एक बार थोड़ा सा समझा पाएँ हमें कि ये किस तरह से यंग एंटरप्रेन्योरशिप को रूरल एरियाज़ में बढ़ावा देगा और ये फंड किस तरह से काम करेगा आगे जाते हुए इनोवेशन और अफोर्डेबल सॉल्यूशंस फॉर चैलेंजेस जो कहा गया, जो फार्मर्स चैलेंज फेस कर रहे हैं, साथ ही साथ एग्रीकल्चर में स्टार्टअप कल्चर को कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो है एक जो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को लाना और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किस तरह से करें। तो जहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक सीड कैपिटल जो वहाँ पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट दिया जा सके, वो स्टार्टअप के तौर पे जो वहाँ पर आ रहे हैं रूरल एरियाज़ में, जो फार्मर्स के सॉल्यूशंस जो हैं। और ये जो एक अनाउंसमेंट है, इसके साथ जो अनाउंसमेंट हुआ है, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए बनाया जाए। जैसे कि हम लोग जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, उसी तरह से वो किसान है, किसान की ज़मीन है, उसका एक नक्शा है और सैटेलाइट के थ्रू उसका जो एक इमेज आती है कि जो फसल की क्या कंडीशन है और उसके लिए एक मार्केट है जहाँ पर उसे प्रोड्यूस करना है। तो इन सबको कैसे हम बना सकें कि एक इंडिया स्टैक फॉर एग्रीकल्चर बन सके। इन दोनों को साथ में रखना है कि जहाँ पर एक क्लियर आइडेंटिटी बन सके, जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स आके और फिर किसानों को वो जो सुविधाएँ हैं, जो उनकी सुविधाएं, जो उनके लिए सर्विसेज चाहिए, किसान को है कि उनकी क्या फसल की क्या परिस्थिति है, उसमें क्या कहाँ पर क्या दाम मिल रहे हैं, इस सब के बारे में। तो दोनों अनाउंसमेंट को साथ में देखने पे इसका बहुत ही ज़्यादा परिणाम निकलेगा, लेकिन इसमें भी समय लगेगा, 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने। और ये ओपन सोर्स आपने बनाया है, उसके पीछे का रैशनल क्या है, उसमें कैसे सभी लोग कैसे उसमें कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे बीइंग एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म? उसमें ऐसा है कि जब ये तो किसान की ज़मीन है, उसका रिकॉर्ड कहाँ है, वो किसी राज्य सरकार के किसी सर्वर में वो रखा हुआ है, इसी का नक्शा भी वहीं पर रखा हुआ है। अगर कोई किसान जाता है और किसी एंटरप्रेन्योर से कहता है कि जी मुझे मेरी जो ज़मीन है उसके एक सैटेलाइट मैप चाहिए कि मेरी फसल की क्या कंडीशन है उसके बारे में पता करना है, या फिर वो कहीं से लोन लेना चाह रहा है, बैंक को उसे चाहिए कि उसने क्या चीज़ उगाई है वहाँ पर, वो बैंक को कैसे पता लगेगा। तो किसान कहता है जी भाई ये तो रिकॉर्ड कहीं रखा है, आप उसमें से वहाँ से देख लो। लेकिन जब तक ये ओपन सोर्स नहीं होगा, कोई भी एंटरप्रेन्योर उसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं डाल सकता है। किसान ने कंसेंट दी, जी मेरा रिकॉर्ड उस राज्य सरकार के पास रखा है, आप वहां से पिकअप कर लो। सो दैट इट बिकम्स ऑन द कंसेंट ऑफ द फार्मर, a bank can get it which crop he has grown with clear area being known, and then he can give the credit for this. So that is the open source advantage it will bring in. Right. तो परमेश्वर सर, ये जो लैंड रिकॉर्ड है उसका पूरा डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस चला, आपको लगता है कितना समय में ये हम पूरे कंट्री में नेशनल वाइड इसको हम पूरा कर पाएंगे, जिससे कि सर जो कह रहे हैं कि एक सभी स्टेक होल्डर्स उसका फ़ायदा उठा पाएँ? तो उसकी I think the digitization of land records is well underway. This program has been going on for quite a while, and it goes along with the overall push on digitalization. Our digital public infrastructure, which is the largest and perhaps most successful in the world. So this is an integral part of that. अभी अजय ने इसके बारे में कहा है. So the agro stack, if you implement it there, this will become a critical requirement. Unless you have digitized land records, it will be difficult for banks to then see it without the farmer coming all the way there, and the presence-less approach will not be followed. So this is going on. It will take some more time, but the ultimate aim is to have all the land records digitized. I think CA sir can add, because he has a special chapter on this agriculture and how to modernize it going forward. No, absolutely. I think what we stated in that chapter and what the CEO of Niti Aayog also mentioned both gel together quite well.
because right now the focus on agriculture in India is not so much as food security, because we have achieved that. The important is to now move towards nutritional security, and that requires enhancing agricultural productivity, about which the Finance Secretary also mentioned in terms of application of the right kind of fertilizers, improving soil yield, crop yield, etc. But the digital infrastructure and its application to the agri sector is part of the idea of using digitization to enhance potential growth, and the chapter on infrastructure also in the survey mentions that this has a potential to add about 30 to 50 basis points per annum to India's real GDP growth. And I see this as an important, therefore, part of that exercise of using digitization to enhance productivity in all sectors, and thus in the overall economy as well. Right, Nageshwar, you said half a percentage per year, sir. 30 to 50 basis points to the potential growth in terms of annually. And sir, आप कुछ add just a data point I would like to share. Today in the country we have 95% plus ownership records are already digitized. But when we come to the spatial data, which is about the maps, the percentage is close to about 80%. But when we move further, that those maps, how much of that are lat and long, latitude and longitude are there, the GIS numbering, the mapping, that is in the range of about 1/3. Okay. And so that is a critical one if you want to use either the drone data or the satellite data to know about the crop. Some states have done almost full, but some states are yet to reach over there. So that's a critical piece, is take that 30-35% to again close to about 80%. Right. Right. Now, CS sir, what are your thoughts on the national data governance policy, how that is going to boost research and innovation for academia and startups? No, absolutely. I mean, when we talk of digitization and then the interoperability, sharing of data between different institutions and different sectors, a data governance policy, both in terms of ensuring privacy and security, are critical cogs in the wheel. And if they are not there, there will naturally be a hesitation on the part of users to permit their data to be used for different economic purposes. So I think this is a pillar that has to fall in place as soon as possible, so that the full benefits of digitization can be realized by all constituencies in the economy. If I can just add to that, Niti Aayog has developed, in fact, together with the CEA, the National Data Analytics Platform. Yes. So this is an open source platform which has got 200 data sets of government based information, and it's interoperable, machine read, so you can actually use this for analysis and public policy. So there's something I think which even the CEA has been using, which is a privilege for us in Niti, again, to use this data easily, and it's 200 data sets, it's on a public platform. Data for governance is the buzzword even in the G20. Right. सोमनाथन सर, अगर हम थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो हमने देखा कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है 111 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, उसमें स्टेट, सेंटर एंड प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन एक निश्चित अनुपात में तय किया गया है. निजी क्षेत्र को या फिर कहें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, और आपने जो ये हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको एक्सपर्ट कमेटी से कहा है कि आप शायद रिव्यू कराएंगे, उसका क्या मतलब है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? Ajay ji. Harmonized master list, it serves two purposes. One, that if we have to do something well, we must be in a position to measure it. What is infrastructure is a critical one, as a distinct from any industrial project. And till about 2 decades back in our country, we had no single definition of infrastructure. So 2012, the first harmonized master list came in, and prior to that there was a list of planning commission, there was a list of RBI, and so on, and so these were all merged and a single one came in. What is infrastructure? What the usage is how the banks finance it, and what kind of a physical incentives, if at all, have to be given, have to be provided for it. So this list was prepared, that report came in 2005, Dr. Rangarajan headed that committee, and 2012 it was announced. But now we realize that the requirements of Amrit Kal are different. For example, we have moved very, very strong on the digital part, digital economy. So this list requires a review, and to get the newer sectors in, and maybe the sectors which have lost relevance, take them out.
और प्राइवेट सेक्टर कैसे इन्वेस्टमेंट हम ला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, उनको अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं इस सेक्टर को उनके लिए? So the private sector will come in only when the project is generating enough returns for them, maybe with some one-time support or maybe recurring support from the government. That's why at that time I went on this aspect that instead of making taxpayers and the next generation paying for it, how do we gradually move towards increasing or putting a user charges? If you look at this manner, till about 2 decades back, toll on roads was unheard in our country. Now toll on roads is an acceptable one. It is still not a fully financed, but maybe about 20 to 25% of the roads can be financed out of the toll revenues with some support from the government. But the challenges in different sectors are entirely different. So that is some of the projects in urban areas. I just heard that one of the cities with the population of about 3 million is generating 150 crores through waste to energy project. 150 crores in a year is not a small sum. So things are moving. और इसीलिए शायद 500 वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने के बाद ये गोवर्धन योजना में आप लोगों ने बनाई है, शायद वो भी एक अच्छा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. There are already close to about 40 plants are already working, and out of 500 projects, 200 projects are the large projects. 300 are community-based projects, but 200 are commercial projects being set up, and those are commercially viable. And the energy which the biogas which gets produced and then it is compressed and is combined with, is mixed with the natural gas and goes for industrial use. Right. Mr. Somanathan, there is a green credit program that has been announced. Can you tell us about how resources will be mobilized? This looks like the next phase of life. Is my interpretation correct that, other than appealing to people to adopt a lifestyle, now there is a credit program so people can accumulate credits? That's right. It is basically, it's not necessarily a financial credit. It's not credit in the sense of bank credit, or it's a credit in the sense of accumulating credits, as you've rightly identified. So this is a policy that the Ministry of Environment and Forest is working on. The contours are not fully defined as of now, but they will be coming out with a policy statement soon on how the green credit program will operate. So I don't have the details with me. Right. You've mentioned the green economy in the economic survey. Sir, your thoughts on a concept like this, a green credit program? No, I think the emphasis given to the green economy in this budget is very comprehensive, from technology to resources to storage and then renewable energy. At the same time, there is also emphasis on nudging farmers towards use of organic fertilizers, natural farming, and then the emphasis on wetlands. Hydrogen mission that you've mentioned mangroves, as well. hydrogen mission, which I left out. Thank you for pointing that out. So all of them actually form a very comprehensive and logical, multifaceted approach to greening the economy. And in that regard, I would say lifestyle for environment and the green credit, it's almost like a frequent flyer program for airlines. You have to accumulate points in terms of how do you sort of act and behave and execute economic activities in a manner that is not destroying the environment, and you get credit for it. So it's a way of incentivizing as well as discouraging activities that are going to be environmentally unfriendly. So I think it's a worthwhile initiative. It complements other programs in the green economy concept as well. But the Niti Aayog want to add to it, how it can probably work out. Of course, the details are actually detailed. But if you recall, there is something called the REC, which is the Renewable Energy Certificate. Right. So if you produce renewable energy, you may not get the price, because renewable energy used to have a different price, a higher price than conventional price. So you don't get that price, the higher price, but you get a certificate which is tradable. So this is one way of giving credit for having produced green, helping the environment. And similarly, you can have certificates, like you have carbon certificates. So that's also an example of green certificate, and so on and so forth. If you are using LEDs, you save so much of energy, and so you help environment, and so you get a credit for that.
The details, of course, have to be worked out, but these are some of the examples how you can give credit for helping the environment. बोलो तो सर, अगर हम थोड़ा सा रेवेन्यू की बात करें तो इस साल का जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन आप लोगों ने पिछले साल के बजट में किया था, शायद प्लीजेंट सरप्राइज मिला इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। अगले साल का जो मेरे ख्याल से जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आपने 10.5% बजट में शायद एज्यूम किया है, उसके ऊपर आप लोग रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो रेवेन्यू से ही ड्राइव होना है। सेम हमने जो बॉयंसी ली है वो सेम 1 का फैक्टर हमने लिया है, तो 10.5% यदि जीडीपी का अनुमान ग्रोथ का है तो सेम ग्रोथ का अनुमान रेवेन्यू में भी है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जैसा मैंने कहा 2 मुख्य इसके अंदर फैक्टर्स रहते हैं, एक रेट हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, दूसरा एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी को हम बढ़ाना चाहेंगे, वो बढ़ती है तो निश्चित रूप से 10.5% से ज़्यादा भी रेवेन्यू में कलेक्शन हो सकता है। टैक्स बेस आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हम कुछ बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट निश्चित रूप से टैक्सेस के बेसिस में बढ़े हैं। मैं यहाँ पे आपको सूचित करना चाहूँगा, जीएसटी हमने पिछले 5 वर्ष पूर्व जो है हमने ये जीएसटी हम लेकर के आए, कई सारे टैक्सेस को हमने एकत्रित किया, एक टैक्स हमने यहाँ पे दिया, और वही हमारी प्रयास कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में जो मैंने पहले पूर्व में कहा और पर्सनल इनकम टैक्स में सिंप्लीफिकेशन की है। जीएसटी भी एक सिंप्लीफिकेशन है। आज आपको मालूम है कि मैं अगर कोई वस्तु खरीद रहा हूँ तो उसके ऊपर मैं क्या टैक्स मैं पे कर रहा हूँ, तो वो एक सिंप्लीफिकेशन के ज़रिए से टैक्स बेस जो बढ़ा उसका एक उदाहरण है कि जब हम जीएसटी लेकर के आए तब वैट के समय में लगभग 60 लाख डीलर थे, जो कि आज के दिन में आपको मालूम है कि 1 करोड़ 40 लाख है। तो इतनी बढ़ोतरी जो है दोगुने से भी उसमें हुई है। और जो टैक्स में जो जीएसटी में जो वृद्धि हुई है वो भी जीडीपी की ग्रोथ से ज़्यादा की वृद्धि हुई है, जबकि रेट हमने वहाँ पे नहीं बढ़ाया है। तो यही प्रयास इनडायरेक्ट टैक्सेस में रहेगा, डायरेक्ट टैक्सेस में भी यही हमारा प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से हम बिना दरों को बढ़ाए हुए कलेक्शन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हुए रेवेन्यू को बढ़ाएं। Right. Now, Mr. Iyer, 2 questions to you. One on the green credit program, because it will be incentivizing individuals, companies and local bodies. So you may have to coordinate with state governments for that. How do you plan to take that forward? And second, the provision that has been made of setting up 100 labs for developing applications for 5G services with a very solution-centric approach, because it involves coming up with smart classrooms with intelligent transport systems, healthcare applications, precision farming. So how do you plan to involve states in this going forward? Sure. So on the first one, of course, this will figure as part of the state support mission, which will continue for the next 3 years. But coming back again on the green credit, which we have been discussing. So lifestyle for the environment is essentially, the Prime Minister announced it in Glasgow in COP26. So you can look at it at the other end of the climate debate. On the one side you have the science, the policy, the NDCs, the discussion which is going on globally on climate financing. And on the other end, how you could, the demand side. How can people actually individually and as a community contribute to climate and become pro-planet people? So there have been studies as well by UNEP where individual action can actually reduce emissions globally by up to 20%. So you can take direct action, simple things, conserving water, using less electricity, etc. So, but that in turn that nudge in behavior can trigger demand. So there's a supply response from companies, from industry to produce more environmentally friendly products. So there's a policy dimension to it as well. Now in terms of credits, again, this has not yet been worked out, but again, these actions which individuals can take, and if they can be verified, could definitely lead to credits. And so that's something which is being worked out by the Ministry of Forests and Environment. On the other front, in terms of technology and research and labs, as you know, we have the Atal Innovation Mission, which focuses on tinkering in schools, setting up innovation, promoting startups, and now, as Ajay mentioned, particularly in the agri space. So all this is going to be part of the state support mission, which NITI will bring to states. But again, it will be, there's no one size fits all. So every state has got a different requirement. And so the support has to be tailored. We have to build on the comparative advantages of NITI, which is in innovation, disruption, digital, mobility,
asset monetization. So we'll be bringing many of these aspects where we have some comparative advantage down to each state depending on the particular need. अब मैं एक जेनरिक सवाल शायद सीए सर ले सकते हैं या सेक्रेटरी साहब आप ले सकते हैं, जो हमारे 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, वो बजट के बाद किस तरह से आप देख रहे हैं अगले साल परफॉर्म करते हुए, अगर आप लोग अपनी एनालिसिस दे पाएँ इन जनरल इस बजट को देखते हुए, मतलब एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. I think the budget actually doesn't discriminate between all the 3 sectors. It's an equal opportunity provider with respect to all the 3 sectors, because for agricultural productivity and investment there are plenty of schemes announced, including organic fertilizers, natural farming, accelerator, credit, etc. Then when it comes to manufacturing, of course, the entire thrust on public investment and the continuing emphasis on PLI schemes, etc., is about raising manufacturing share, and the public investment is going to accelerate that. When it comes to services, of course, the new skilling mission, the number of new nursing colleges, the entire emphasis on tourism sector is all about making the best out of India's service sector advantages. So the budget actually does a pretty good job of ensuring that all 3 sectors fire in terms of boosting the economic growth in the years ahead. तो फाइनेंस सेक्रेटरी सर, लास्ट वर्ड इस प्रोग्राम में. आप बजट के बारे में जो शायद हम लोग सवाल नहीं कर पाए, बहुत सारे लोगों ने आपसे सवाल आज किए होंगे, जो चीज़ आप बताना चाहते हैं और सवालों में नहीं पाए, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए प्लीज़. I think there are some important announcements that I've been watching what you're putting out there. I think one of the very important parts of our economy is not in the executive branch, that is the judicial branch. So there is an important announcement in this budget for the e-courts phase 3 project. This is a project which at a cost of 7,000 crores will involve digitizing all the court records throughout the country, not just the higher courts, but also the district courts and the courts which are below the high court level. It's a massive project, and it will help bring the judicial branch of government into a higher level of digital and electronic governance. I think it's an important project. I have noticed that nobody has asked me this question, and nobody has, I think, reported it in this. So I thought that's an omission that I would like to fill. There are a few more, but that would be... No, please carry on. I think there's an important aspect of this budget, which is there has been some commentary on the fact that the maximum marginal rate of income tax has come down, and that's a very conscious objective of the government. But quite a few steps have been taken in this budget to close loopholes, which are predominantly used by those with the highest incomes in the country. Some of them are well known, such as that certain very high level insurance policies, which are investment policies. We are, again, I would clarify for this is an important point. Any policy of insurance of any value, however big it may be, if it is for term insurance or if it is payable after the lifetime of the purchaser to his family, continues to be tax free. There's no limit on that. But there are a lot of investment policies, insurance policies, which are actually investments, but which are clothed as insurance policies in order to get tax benefits. Now, those kinds of policies, a cap is being brought so that it is not a source of avoiding what should legitimately be paid as income tax. The same with an instrument called the market linked debenture, which is actually a debenture in every sense, but wears certain clothes of an equity investment and thereby gets taxed as an equity investment. So we are sort of piercing the veil of these clothes that they wear and getting into the reality of the substance of the transaction and taxing them accordingly. And then there is a provision where if you have acquired a capital gain on real estate and you invest it in another piece of real estate, or if you've acquired a capital gain on something else and you invest it entirely in real estate, the entire amount was tax free. And there have been cases of people with large sums of money who have been in the maybe through a startup or some big amount. All you have to do is to find a suitably expensive piece of real estate somewhere in Bombay or somewhere, and the entire gain is tax free. So these have impeded the buoyancy of tax revenue because the sections of society
which are actually progressing in the new economy also need to pay their fair shares of taxes. So these are basically loophole closing measures. So we are moving towards a tax structure which has lower marginal rates, which is economically efficient, but also has fewer places to hide. अजय सेठ सर, इंटरनेशनली इन्वेस्टर्स को हमारे इस बजट को किस तरह से देखना चाहिए? व्हाट आर द कोर एरियाज ऑफ फोकस फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स? बिकॉज आप तो इंटरनेशनली जो एजेंसीज हैं उनके साथ भी डील करते हैं, इसलिए So first of all, an international investor looks at the macroeconomic stability, what the policies are. As far as fiscal policies is concerned, it is very clear signal has been given. Invest into the economy, keep the growth rates high, and maintain the overall fiscal prudence. And with a consistent policy on the monetary side, gives a lot of confidence to international investors to look India, and they are looking at India in a very positive light. पाना सर, अगर आपसे सीधे सवाल करें, IDBI, SCI, ये जो कंटेनर कॉरपोरेशन, भारत अर्थ मूवर्स, कुछ NMDC की सब्सिडीज, इन सब का डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ प्लान्स हैं या आप बिल्कुल कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते? ये तो ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस हैं और समय समय पर हम बताते रहते हैं मार्केट को जो प्रोसेसेस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। So you want to thank all? Right, yes. Thank you so much for joining us, secretaries in the Ministry of Finance, as well as the Chief Economic Advisor and CEO of Niti Aayog. It was a pleasure to speak to all of you, and I'm sure the viewers stood a lot to gain because you've clarified a lot of things and put things in perspective, which doesn't happen at the start of the day, but you know, by the time the day rolls out, we have you all, so things are put in perspective. बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू। Thank you so much for joining us.